jointly towards it. Dusra, I know it's a polarized society, and in this polarized environment, we would try to differentiate between politics and law. There is a rule of law and there is a rule of order. We would ensure that rule of order is not compromised in any way. Rule of order would ensure and lead us towards the rule of law. If there is chaos, if there is anarchy, no governance system, no secular system, no religious theocratic system, whatever the people of a concerned territory wish to live with it, you can't have that. So we know the sanctity of the order. That would be kept at any cost. Pakistan is owned and shared by all ethnicities, by all creed, by all religious backgrounds. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, his famous speech of 11th August was a projection for the idea of a citizenry where no identity-based rights would be prescribed. Rights will not be given to the people on the basis of noun, right? Rather, it would be allocated on the basis of adjective, on the basis of conduct, on the basis of character, on the basis of behavior. The best of the best has to come and excel in this society. There are many dreams around the globe, but let's start having a vision of a Pakistani dream, and let's realize this Pakistani dream. Pakistani dream is the dream of our soul. It is imbibed by the ideas of Iqbal, the enlightened Iqbal. He would strongly discourage rigidity, be it in any form in this society. We do not stand for the forces of darkness. Rigidity being in the garb of religion or secularism, any other form. These extreme attitude, they are not just unwelcomed, they would be discouraged. They would be curbed and controlled by the law. I have a deep sense that along with our economic challenges, which are huge, with an able like yourself, we will try to ensure we have a sense of sanctity of the taxpayers' money, this money on which we even are having today's meeting, consuming this water, tea, traveling, doing any sort of actions. It is paid by the people of Pakistan, and we have that sense of sanctity towards them. By the common vendor, he contributes towards our gathering. By a shopkeeper, by a civil servant, by a teacher, by a lawyer, they all contribute towards us so that we can deliver for them the social services. We can provide that secure environment for them. So that utmost duty, inshallah, maybe it is for a month, 2, 3, I don't know, or 3.5, whatever the allocated time is, we will demonstrate not through our words, but through our actions. The minorities, inshallah, will stay protected in this country. There may be an attempt to harm them from a section of marginalized and peripheral group of people, but that would be responded sternly and strictly by the state and society both. Pakistani state and society does not align and identify with such elements. They may be from us, but they are divorced from us. They are divorced from our identity process. We do not identify with them. We want to keep ourselves distant to them. One of the main idea of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's message with all the monotheist tradition, with all the Abrahamic tradition, was, and will remain
the idea of dhami or zami or minority. They always envisioned that there would be a situation where your community probably would be in majority. So when you are in a majority, the minority has to be protected, not on the basis that they would convert to your worldview, not on the basis that they have to have the same kind of world outlook. They can differ with you, but the basic human dignity, the security, the provision, sustenance has to be ensured by this divinely inspired idea. And Pakistan, alhamdulillah, was created on those tayyaba and noble principles. Pakistan is the product of noble idea. Pakistan is a romance. And let's start realizing that romance with today's first cabinet meeting. I'm sure you would be given some task, and I expect that within 3 to 4 days, with all the inline departments, we will be having briefings, and with Godspeed, we will start, inshallah, to deliver. Last but not the least, we have seen some sabotage activities on May 9th. I would explicitly express my not just discomfort, but it was a way of disappointment that how and where did we reach on that day. Not just that our military installations were attacked. Gentlemen and ladies, let me remind you, when I was growing up, a new virus was emerged by the name of AIDS, and it was acquired immunodeficiency syndrome. The nature of the virus was that it would attack the immune system of the body, and then you could have died. It would have been fatal even for a very mundane diseases like flu. So for any polity, if its immune system is attacked, it leads towards its fertility. And in our context, these emblems, these symbols are important. These state symbols, when they are attacked, state doesn't disappear or vanish within a day or two or week. It's a process. And the initiation of that process, or an attempt at least to do so, in my mind comes that it was exhibited on May 9th. We not just condemn it, now we are in the role to ensure that justice is being done, and whosoever violated laws on those days would be treated by those laws. There won't be any favor, there won't be any fear. We will try to implement with justice and neutrality. Our core issue, Kashmir, cannot be ignored, as it does not lie in our memory or in mind. It lies in our soul. Transform, soul can't. For us, Kashmir is eternal. Thank you so much. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल-हक काकड़ काबीना इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे, और उनकी जानिब से जो गुफ्तगू की गई, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे, और जितने भी मसाइल हैं उन तमाम मसाइल का इदराक है वफाकी काबीना को। और मेरे साथ एक बहुत ही तजुर्बाकार और बेहतरीन टीम है, इसी पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। ये पहली गुफ्तगू, पहला वफाकी काबीना का इजलास, जो गुफ्तगू उन्होंने की है बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू है, सुनने में भी अच्छी लगी, और जो उन्होंने फ्रेम ऑफ वर्क दिया है वो भी बहुत ही अच्छा। कैसे देखते हैं आप आज की गुफ्तगू को निगरान वज़ीर आज़म की? देखिए, बड़े चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को, और उसमें वो जो एक संजीदगी चाहिए और जिस तरह की टीम चाहिए कि तजर्बेकार लोगों पे मुश्तमिल हो, तो वो आपको नजर आ रहा है। जो रिजॉल्व का इजहार किया, एक तो देखिए आपको सबसे जो मेरे ख्याल में खुशाइन बात है कि कोई बड़ा तनाज़ा नहीं बना इस निगरान हुकूमत के आने पर, और किसी ने भी इसके जो मेंबरान हैं वो एक आध को छोड़कर लोगों पे इतराज नहीं किया, चाहे वो वजीर आजम की शख्सियत हो या उनकी काबीना की। फिर दूसरी बात हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान को गैर मामूली हालात का सामना है। गैर मामूली हालात का सामना, एक तो ज़ाहिर है कि माशी बहरान की तो कहने की जरूरत नहीं है, जो इस मुल्क के लिए और
इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसमें खुशी की बात यह है कि यहाँ पर आपके पास शमशाद अख्तर साहिबा जैसी मतलब है कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि जिनको बड़ा वसी तजुर्बा है कौमी सतह पर भी और बैन अवी सतह पर भी काम करने का। और आपको पता ही है कि पहले भी निगरां वजीर खजाना रह चुकी हैं, उससे पहले गवर्नर स्टेट बैंक की इन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं। फिर जो मल्टीलैटरल जो मतलब बैंक्स हैं, लैंडिंग एजेंसीज है, वहां पर इन्होंने काम किया, तो वहां पर हमें पता चलता है कि सेफ हैंड्स हैं। फिर हमारा दूसरा चैलेंज जो है बहुत बड़ा वो खारजा महाज पर है कि हमें पता है कि हमें एक कहते हैं हॉस्टाइल इंडिया का सामना है। हमें पता है कि अफगानिस्तान में सूरत हाल जो है बहुत ही मखदूश है और वहाँ की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, जिसका इशारा जो है हमारी सिविल और फौजी क़यादत दे चुकी है। तो वहाँ पर हमारे सामने जो है जिलानी साहब जैसे जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर हैं कि जो खुद मतलब है कि आप कहें ना कि हमारी फॉरेन ऑफिस के ट्रेडिशन में ढाले गए हैं, उनको पाकिस्तान की जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और फॉरेन अफेयर्स के चैलेंजेस हैं उसका इदराक है जी। तो वहाँ पर भी आपको नजर आता है कि एक बेहतरीन इंतखाब है इनके पास। तो टीम की जो ओवरऑल कम्बिनेशन है उसमें फिर आपको सरफराज बुख्तियों ने तजुर्बा है बलूचिस्तान के इंटीरियर मिनिस्ट्री के लेवल के ऊपर चलाने का, और क्योंकि उनकी कुर्बत रही है काकड़ साहब से, तो पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है, दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो वहाँ पर एक वो सेफ है। तो मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो ये एक अच्छी टीम का मजमूआ। मैं ज़ाहिर फर्दन सबके नाम लूंगा तो बहुत तवील बात हो जाएगी, लेकिन हमारी जो 2-3 की मिनिस्ट्रीज हैं जो उसमें फाइनेंस की हो गई, फॉरेन हो गई और इंटीरियर मिनिस्ट्री हो गई ना, तो उसकी अगर आप बात करें तो इट इज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। और तो लेट्स होप के भी तो खैर बहुत ही अर्ली है ये कहना कि जी मतलब है कि किस हद तक कामयाब होंगे, लेकिन जाहिर है कि पूरी कौम की तमन्नाएं दुआएं हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोयटा से अहम खबर दें आपको, बर्मा होटल के करीब फायरिंग हुई है। फायरिंग से नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मीर दौरान खोसा शदीद जख्मी हो गए हैं। दौरान खान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं पुलिस नुमाइंदे दानिश मुराद से। दानिश, मजीद क्या मालूम हो सका है, पुलिस की जानिब से क्या बताया गया है? देखिए, ये क्वेटा का एक अहम इलाका है सरियाब रोड। उसी सरियाब रोड के एक इलाके में जो है वो अब से कुछ देर कबल फायरिंग हुई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग में जो है वो नेशनल पार्टी के सूबाई टिकट होल्डर हैं मीर दौरान खान कोसा, वो शदीद जख्मी हुए हैं, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग जो है वो गाड़ी पर हुई है, जबकि ओवरऑल सिचुएशन ये है कि उसे अस्पताल तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहाँ पर इब्तदाई तबी इमदाद जो है वो दी जा रही है। अब से कुछ देर कबल जब पुलिस से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इलाके को जो है वो अब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, तो उस एरिया को जैसे अब खोल दिया गया है। जबकि मीर दौरान कोसा पर फायरिंग के बाद जो है वो नेशनल पार्टी और जो दीगर क़यादत है नेशनल पार्टी की वो अस्पताल पहुंचना शुरू हो गई और वहाँ पर अब जो है मीर दौरान कोसा का इलाज जारी है। जी, बहुत शुक्रिया दानिश मुराद इन तफसीलात। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद देखिए बारिश कहां, सैलाब कहां। BOL News Headquarters. So juicy.